अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। आज हम CS302 के फाइनल टर्म जो MCQs हैं जो लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। A 8-bit serial in parallel outshift register contain the value 8। ओके, बात मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर्स बताऊंगी। Dash clock signal will be required to shift the value completely out of the register, that is 8. In a sequential circuit, the next state is determined by current state and external input. The divide by 60 counter in a digital clock is implemented by using two cascading counters, that is mod 6 and mod 10. In NOR gate based SR latch, if both S and R input are set to logic 0, the previous output state is maintained. Is it true or false? This is true. The minimum time for which the input signal has to maintain at the input of flip-flop is called dash of the flip-flop, hold time. 74HC163 has two enable input pins which are dash and dash, which are ENP and ENT. Dash is said to occur when multiple internal variable changes due to change in output in one input variable है race condition. The dash input overrides the dash input. It's important कि काफ़ी पेपर्स में आगे जाकर रिपीट हो रहा है तो इसे ज़हन में रखिएगा। A synchronous input overrides the synchronous output. Guys, input है। A decade counter is mod 8 mod 10 counter. In asynchronous transmission, when the transmission line is ideal, it is set to high logic. Yes, logic high. A nibble consists of dash bits. याद रखिएगा nibble हमेशा 4 bits पे consist करती है. The output of this circuit is always circuit देख लें इसका output हमारे पास A होगा, ये वाला A जो होता है. Excess 8 code assign dash to minus 8. हमारे पास पता था हमें nibble 4 होते हैं तो लाजमी बात हमारे पास excess में जब आएंगे तो 4 zeros हो जाएंगे. LUT is acronym for dash, that is lookup table. ये important है, आगे पेपर्स में आया है. The three fundamental gates are NOT, OR and. The total amount of memory that is supported by a digital system depends upon the size of the address bus of the microprocessor. Stack is an acronym for LIFO memory. ये last in first out memory होती है LIFO. Addition of two octal number 36 and 71 result in plus करना है इनको और आपके पास आंसर आ जाएगा 127. Dash is one of the example of synchronous input, JK input. Dash occur when the same clock signal arrives at a different time at a different clock input due to propagation delay, clock skew. In a state diagram, the transition from a current state to the next state is determined by current state and the input. Dash is used to amplify the circuit that determines the next state. Its answer is state assignment. 8-bit serial है ना, ये दोबारा रिपीट हो गया. देखिए मैंने आपको कहा था ना, shift register contain the value 8 clock signal will be required to shift the value completely out of the register. It's important. It's 8. इसका आंसर 8 है, ये important है. Assume that a 4-bit serial in a serial out shift register is initially clear. We wish to store the nibble 1100. What will be the 4 pattern of the second clock pulse? Right most bit first लिखना था हमने. Right most bit first जब हम लिखेंगे तो 0 है, 0 0 0 हो जाएंगे. फिर क्योंकि हमारे पास डबल शिफ्ट कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने बताया था LUT स्टैंड फॉर अब दोबारा आ गया है. लुक अप अ टेबल. द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट. डायग्राम देख लीजिएगा. सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कहते हैं इसे. द ऑपरेशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर टू दैट द SR फ्लिप फ्लॉप एक्सेप्ट द JK फ्लिप फ्लॉप डजंट हैव एन इनवैलिड स्टेट. देखें पहले ये कह रहे हैं JK फ्लिप फ्लॉप को सिमिलर है SR फ्लिप फ्लॉप के, लेकिन फिर कह रहे हैं JK फ्लिप फ्लॉप के वो नहीं है, तो ये तो बात हुई नहीं ना, तो इसलिए डजंट हैव एन इनवैलिड स्टेट. MCQ समझ के किया करें तो ईजी हो जाते हैं, आपको इंशाल्लाह आ जाएंगे सारे. द मल्टीप्लेक्सर विद रजिस्टर सर्किट कन्वर्ट्स पैरेलल डेटा टू सीरियल. मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, वो रजिस्टर सर्किट को कन्वर्ट करता है पैरेलल डेटा से सीरियल की तरफ. A GAL is essentially a reprogramming pearl. और सब समझ आ रही होगी आपको. काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा. मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स के. In dash, all the column in the same row are either read or written.
fast mode page access. In order to synchronize two devices that consume and produce data at a different rate, we can use FIFO. FIFO memory, yani first in first out memory. A positive edge triggers flip-flop changes its state when low to high transition of a clock. Now 2012 और आगे onward हम चलते जाएंगे. In a sequential circuit, the next state is determined by dash and dash input and clock signal applied. The divide by 60 counter in a digital clock is implemented by using two cascading counter. Repeat हो चुका है mod 6 and mod 10. In NOR gate based SR let if both S and R inputs are set to logic 0, the previous output state is maintained. That is true. ये भी repeat है. Flip-flop is also called bistable multi-vibrator. याद रखिएगा flip-flop को हम bistable multi-vibrator भी कहते हैं. The minimum time for which the input signal has to maintain at the input of flip-flop is called dash of the flip-flop, hold time. देखिए minimum है तो थोड़ी देर रुका हुआ time हो जाएगा. 74 SC163 has to enable input pins which are dash and dash. Repeat हो चुका है ENP and ENT. Dash is said to occur when multiple internal variables changes due to a change in one input variable race condition. देखें इस दफ़ा पेपर सारे लास्ट ओल्ड पेपर से आ रहे 80% तो ओल्ड पेपर से आ ही रहा है तो मैंने आपके लिए कोशिश की है कि 10 साल के ये मैं कर दूं पेपर तो काइंडली मेरी एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा. Given the state diagram of an up-down counter, we can find the next state of a given present state. दोबारा repeat हुआ है the dash inputs overrides the dash input. मैं हमेशा से output कह देती हूँ ये input है. A synchronous input overrides the synchronous input. A logic circuit with an output x is equal to a b c plus a b consists of ये हमें लेक्चर 8 में बताया गया था 2 AND gates and 1 OR gate और 2 intervals. 2 AND gates हैं एक OR gate और 2 intervals हैं. A decade counter is mod 10 counter. In asynchronous transmission when the transmission line is ideal ये repeat हो गया it is set to a logic high. मैंने बताया था कि आपको high logic या logic high की जरूरत है. फिर repeat आया है a nibble consists of dash bits 4 bits. देखिए काफ़ी ज़्यादा repeats हो रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा. The output of this circuit is always अच्छा ये सर्किट फिर वही आ गया रिपीट वाला देख लीजिएगा ये वाला ये है हमारे पास देखेंगे तीसरी दफ़ा रिपीट हो रहा है. एक्सेस 8 कोड असाइन डैश टू -8 40. The voltage gain of inverting amplifier is given by the relation V out slash Vn is equal to -RF slash RI. ये रिपीट हो रहा है. Again repeat है LUT is acronym for lookup table. DRAM stand for dynamic RAM. DRAM stand for dynamic RAM. The three fundamental gates are NOT or AND. अच्छा इसमें ज़्यादा रिपीट्स ही आ रहे हैं आपके ये सारे ओल्ड पेपर्स ही लिए गए हैं. Which of the following statements true regarding above block diagram? ब्लॉक डायग्राम देख लीजिएगा इसके पे देखने के बाद आपको पता चलेगा इसकी स्टेटमेंट कौन सी ठीक है. Triggering can take place anytime during high level of the CLC waveform. The total amount of the memory that is supported by any digital system depends upon the size of the address bus of the microprocessor. ओके इस एमसीक्यूज़ को ठीक कर लीजिएगा. सॉरी मैंने ये ब्लॉक डायग्राम सही उस वक्त नहीं चेक की थी. देखिए ट्रिगरिंग हमारे पास आ रही है नेगेटिव साइन की तरफ जा रही है CLC प्लस पर है ना CLK प्लस पर है तो इसका हमारा आंसर आएगा ट्रिगरिंग टेक प्लेस ऑन द नेगेटिव गोइंग एज ऑफ द CLK प्लस. ये नेगेटिव गोइंग है यहाँ पर ट्रिगल हो रहा है CLK तो याद रखिएगा ये वाला. The expression f is equal to a plus b plus c describe the operation of 3 bits dash gate or gate. Gates को याद रखिएगा और gates में बहुत ज़्यादा आता है. Stack is an acronym of ये भी repeat है LIFO. Addition of two octal number 36 and 71 result in 127. ये भी repeat है. इसके बाद हम 2013 पे आ जाएंगे. काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा. तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और से आपको समझ आई होगी.
2013, 14, 15 आगे ऑनवर्ड इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में सारा कवर कर